अच्छा M1 की क्या वो है अपडेट, आपने कर लिए सारे क्वेश्चंस? यप। चलें क्लास में डिस्कस करते हैं। अच्छा तो बहरहाल लेट्स मूव ऑन। हम डिस्कस कर रहे थे going to discuss now about A2 physics, and there is oscillations. So we had discussed up to the point. Okay, now let's move on. अच्छा एक मिनट रुकने जरा, मैं अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास let's consider another example where you would find oscillation. That's a pendulum pendulum mass system है. Both are spring mass system. Now this is pendulum mass system. So you have this you have a pendulum, you have this, pendulum attached to this end, you have this as your string, and this is your pendulum. It has a mass of m, this has a force due to gravity acting on it, mg. All right, now this is the equilibrium position. Okay, Riva, and you have the tension T in the string, you have the mg force acting on it, and so this is the point where you don't have any displacement of the pendulum. ठीक है ना, यहाँ पे आपकी pendulum की कोई displacement नहीं. So over here you have x equals to 0, and this is the length of the string. That's the length of the string L. Achha, I'm setting sign convention. Upwards it's positive, downward negative, rightward positive, down leftwards negative. Okay. Achha, in now this pendulum has been displaced from here to here. What can you see, Zoha, is that there is horizontal displacement as well as there is some vertical displacement as well. It's just not displacement in one direction, but in two directions, in horizontal direction as well and the vertical direction as well. That's why I have set the convention for both the directions, horizontal and vertical as well. So in x direction, if I apply Newton's second law, so what do you think? What is going to be your resultant force? Now let me first break down T, because now T is no more acting in the vertical direction. And this is theta, which means that this is the angular displacement of the pendulum. This is the angular displacement of the pendulum. It has been displaced at an angle of this theta. So what can you do is now this is also going to be theta alternate. And so this component of T, which is adjacent to theta, is going to be T cosine of theta, and this component is this component actually. This is actually opposite to theta, so it's going to be T sine of theta. And what I have resolved so that I could have the components of T in the vertical and the horizontal direction, because I am applying Newton's second law in vertical and the horizontal direction. So in x direction is the horizontal direction. If you apply the Newton's second law, so you're going to have just T sine theta as your resultant force, not any other force, or कोई force है नहीं horizontal direction. So minus T sine theta equals to ma. Okay. All right. Now, what do you think in y direction? In y direction, in the vertical direction, you have T cos theta acting upwards, mg acting downwards. So T cos theta minus mg is going to be a resultant equals to ma. But what I'm assuming is that this horizontal displacement, vertical displacement is negligible. ठीक है रीबा, यानी कि बॉल जब इधर से इधर आई है तो इसकी जो horizontal displacement है that is appreciable,
लेकिन जो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो इतनी अप्रिशिएबल नहीं है, तो इन दैट केस आई एम गोना टेक एक्सेलरेशन टू बी एज 0, क्योंकि है ऐसा नहीं है कि नहीं होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, बट आई एम assuming it, I'm just taking it to be negligible. That's why I have taken its approximate value as 0, because it's negligible. और negligible क्यों है? क्योंकि I have assumed कि आपकी जो vertical displacement है, that's very small compared to your horizontal displacement. So t cos theta minus mg equals to 0. So t cos theta is equals to mg. Now cos theta. Cos theta. Now what is cos theta? Now if you just complete this right angle triangle, Zoha, ये theta है, this is L, this is the length of L, this is the length of the string L, ठीक है ना, and this is cos theta. So this is actually t cos theta, ठीक है, and this is t, this is just t, ठीक है. रिबा क्या हो रहा है, ये जो है t cos theta है, and this is just t. अच्छा, तो मैं दरअसल अज्यूम कर रहा हूँ अरीबा कि आपके पास जो ये है ना, मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ अरीबा. आप अगर ये मैं कंप्लीट करता हूँ ना ये ट्रायंगल, तो आपके पास ये लेंथ L है, which is the length of the string L. अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो इसकी ये जो है ना, ये दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस L, यानी कि इसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, आई एम टेकिंग दैट टू बी एज नेग्लिजिबल. समझ रही हैं? मतलब ये इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट है, इधर आ गया, इसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, आई एम टेकिंग दैट टू बी एज नेग्लिजिबल. यानी ये जो है ना, ये आपका ना होने के बराबर है. अब ये अगर आपका ना होने के बराबर है, इसका मतलब ये मैं फिर क्या ले लूं, लेंथ L ही ले लूं, और ये भी L ले लूं, ठीक है ना. और फिर मैं अगर cos थीटा लूंगा तो ये एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, L ओवर L क्या हो जाएगा, cos थीटा. मतलब यूं समझ लेंगे इसको, मैं थोड़ा सा और अगर बनाऊं ना, तो ऐसा है रिवा, ऐसा. तो ये वाली लेंथ जो स्ट्रिंग की है और ये इट्स ऑलमोस्ट सेम. मतलब अगर मैं ये करूँ ना, ये तो यहाँ से यहाँ तक और ये तकरीबन सेम ही. अब मैं इतने, मुझे पता है कि पूरा ये पूरा मिलाएंगे तो L होगा, लेकिन मैं अज्यूम कर सकता हूँ अरीबा और जोहा कि मैं इवन अगर मैं नीचे तक ना भी लूँ, ये हिस्सा ना भी लूँ, तो ये भी आपका दरअसल L के बराबर ही होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर होगा. वो इतना सा हिस्सा जो है ना, उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेंगे. तो दरअसल मैं यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ कि ये चीज और ये दोनों बराबर है. क्यों बराबर है? क्योंकि मैं ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना, वो मैं इसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहा हूँ. तो फिर आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी L है आपका और ये भी L है, तो ये एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा L ओवर L हो जाएगा. तो T विल बी इक्विवेलेंट टू mg. मतलब इवन एट दिस पोजीशन आपकी जो T है वो mg के बराबर. जैसे यहाँ पे तो T और mg बराबर थे ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, T ऊपर mg नीचे, T माइनस mg इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे भी T और T वाज इक्विवेलेंट टू mg. यहाँ पे भी आई एम अज्यूमिंग कि इसकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना, वो नेग्लिजिबल है. इसकी वजह से यहाँ पर भी आपके पास फिर T और mg विल बी इक्वल, यानी cos थीटा की वैल्यू दरअसल 1 हो जाएगी. अगर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसको अगर मैं नेग्लिजिबल ले रहा हूँ, उसको नहीं कंसीडर कर रहा, तो फिर ये लेंथ और ये और ये फिर बराबर है, L की इक्वलेंट है. तो ये आपका एडजस्टेंट हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, L ओवर L क्या हो गया, 1 हो गया.
अच्छा, अब अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं तो माइनस टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा, अब ये जो है ना, ये निग्लेजिबल नहीं है। साइन थीटा क्या होगा? ये हो जाएगा, ये पूरा x है, इसको मैंने x लिया है, यानी ऑपोजिट को जो है ना, मैंने ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और साइन थीटा क्या होगा? ये आपका हो गया ऑपोजिट, और ये आपकी जो लेंथ एल है ये हाइपोटेनस होगी, तो यानी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस इक्वल्स टू एम, और ए को हम एक्स डबल डॉट लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज। अब आवाज आ रही है? जो बात समझ आई बेटा, आपको नहीं आई? जी सर। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं जो कि आपके पास मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, यानी ये पूरा उठा के इधर ले गया, प्लस कर दिया, एम एक्स डबल डॉट प्लस ये वाला एम जी एक्स ओवर एल इक्वल्स टू 0। फिर मैंने एम कॉमन निकाल लिया और दूसरी वाली जगह डिवाइड करूंगा तो यू विल बी लेफ्ट विद एक्स डबल डॉट प्लस जी ओवर एल एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ this is a similar differential equation that you got previously when you had the system, when you had the spring mass system. Similar equation यहाँ पे फॉर्म हुई, बस फर्क ये है कि you have now what you have over here in place of k over m, क्या आ गया आपका? g over l आ गया, because you don't have the spring constant, all right, so that's why. तो g यहाँ पर आपका जो, तो आपका what we can deduce was कि यहाँ से हम एक चीज डिड्यूस कर सकते, हम रिड्यूस ये कर सकते थे, हमें पता है ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर आ रहा था? ओमेगा किसके बराबर आ रहा था? अगर आप इन दोनों कंपेयर करें, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था? के ओवर एम के ना। मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो के ओवर एम, यानी ये जो के ओवर एम है ना, दरअसल ये ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपके पास के ओवर एम की जगह जी ओवर एल है, तो आपका ओमेगा स्क्वायर फिर क्या हो गया? जी ओवर एल। तो ओमेगा क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल, यानी टी क्या हो जाएगा? फिर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, इंटू 2 पाई कर दूंगा, 2 पाई एल ओवर। So now, if you have a pendulum, if you have a pendulum system, what can you deduce from this equation for the time period is that the time period, because we know कि आपका जो pendulum है that's going to undergo oscillation, because it's going to undergo a repetitive motion. That is, it's going to get displaced in either direction about the central value, in this direction as well as in this direction, and it's going to undergo that displacement repetitively. That's why they're saying that the pendulum is undergoing oscillation, and how one oscillation is going to, when is going to one oscillation get completed is when, for example, from wherever when the pendulum is released, whether released from the equilibrium position or from the point of maximum displacement. So from wherever the pendulum is released, so when it comes back to that point once, only then you have one oscillation being completed. So now what can you see, what can you deduce from here regarding the time period of the oscillation, and that is independent of the mass of pendulum, which means that it doesn't matter how heavy your pendulum is attached to the string, so the time period is not dependent upon it. Now that's very non-intuitive. You may have very heavy pendulum attached to the same string, and you would find that the time period remains the same. All right, but yeah, it's actually dependent upon only on L, because G is, we know that it's constant. All right, yeah, but if you take that to Mars, for example, अगर आप इसको Jupiter या किसी और planet पे ले आते हैं, so you have a different value for G, so you're gonna have a time period of this pendulum get affected. फिर वहाँ आपका जो time period है इस oscillation का, मतलब इस pendulum का जो time period है, इस pendulum की oscillations का जो time period है वो affect हो जाएगा अगर आप इसको दूसरे planet पे ले जाएंगे, because it's dependent upon G, and in fact when G goes down, the T goes higher.
When G goes up, the T goes down, which means that if you're going to take that to Jupiter, so you have much stronger gravitational field strength, and so you would find that the time period goes down. All right, it's going to oscillate much faster. All right, and similarly, if you're going to take that to Moon, so compared to Earth, you're going to have G, which is much lower than that of Earth. So the gravitational field strength is lower than that of Earth. So you're gonna have T go up. Of the time period of the oscillation of this pendulum system is going to go up. It's going to rise when you're going to take this pendulum system onto the moon. ठीक है ना? And because over there the gravitational field strength is higher. That's what this equation tells you, and it's also dependent upon the length of the string. So the longer the string, all right, it even does not depend on that's what we have already discussed in the last system, the spring mass system as well, that आपको जो time period है spring mass system हो या pendulum system हो, उसमें जो आपका oscillations का जो time period है that is independent of the mass, independent of the amplitude. Now this is actually this x would be is what we refer to as the amplitude. It's the maximum displacement in the horizontal direction. We are referring to we are just assuming or taking the vertical displacement to be very negligible, or you can just approximate that equivalent to zero. ठीक है ना? But yeah, you do have appreciable amount of displacement in the horizontal direction, and the time period for either it's a pendulum system or a spring mass system or any other system in which you have the object or undergoing an oscillatory motion. So in that case, you don't have the time period of the oscillations in that system dependent upon the amplitude. Over here as well, you can see the equation for T. It's independent of the amplitude or how far from how far your pendulum has been released. All right, you may release it from the equilibrium position with a certain velocity, or you may release it from rest by from its point of maximum displacement. And even when you are releasing it from the point of displacement, it doesn't matter from how far you how far you release it. You may release it from over here. You may release it a little closer to the equilibrium position. It really doesn't matter. All right. As far as your this pendulum system, that is a string, and as far as the region in which you are, as far as the value of G, or the region in which you are using this this system, that is if you are within the earth, so you will then have the time period remains constant regardless of the mass of the pendulum, regardless of the point of release of the pendulum, either from the equilibrium position with a certain velocity or being released from a point of maximum displacement. So the time period does not get affected, all right, by the mass, by the amplitude. Whether it's a spring mass system or the pendulum system. If I double the mass at one end of the pendulum, then the horizontal component of tension will double. देखो आपका अगर मैं mass डबल कर देता हूँ ना, बढ़ा देता हूँ, mass को बढ़ाऊंगा, force due to gravity बढ़ जाएगी, तो tension बढ़ जाएगी. And when you're going to displace it to this point, अगर आप pendulum को इधर displace करेंगे, तो चूंकि t की magnitude बढ़ गई है, तो t sin theta की magnitude बढ़ जाएगी, और t sin theta की magnitude बढ़ गई, तो मुझे पता है that is acting as a t sin theta is acting as a unbalanced force in the horizontal direction. तो उसकी वजह से horizontal direction में acceleration बढ़ जाएगी, and so you're going to end up with a much faster you're going to end up with one oscillation at a much faster rate. ठीक है ना? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, will double, hence the restoring force will double, acceleration remains the same, and so the period. एक मिनट. अच्छा हाँ, sorry. It's talking about mass. So if I double the mass at one end of the pendulum, you know that the tension will increase, and so when you're going to displace it to this point, आपका यहाँ tension increase हो गया, तो इसका जो ये दोनों components हैं, इसकी value बढ़ जाएगी.
the component of tension will double, hence the restoring force will double. Now you have this F net. So ये चूंकि that is equivalent to T sin theta, so that's going to double. अगर मैं mass बढ़ाता हूँ, mass double करता हूँ, तो ये T sin theta component भी double हो जाएगा, and so acceleration will remain the same. When the acceleration will remain the same, so of course then the time period will remain the same. So it means that आपका जो pendulum का जो उसकी acceleration है, जो उसका time period है, that doesn't get affected by the mass, by bringing any change in the mass of the pendulum. ठीक है ना? अच्छा, for G, let's suppose you are in space and there is no G, the pendulum will not swing. मतलब if you are in space, you don't have any G. ठीक है ना? अगर G नहीं है तो G zero है, let's suppose, or approximately you can just take it to be equivalent to zero. So your time period will infinite. Time period infinite का मतलब है that it will never swing. ठीक है ना? And so its period will be infinitely long. So the pendulum will not swing. At a time period infinite है या defined नहीं है, it means that आपके जो pendulum है, it's not swinging. When you have a pendulum that is swinging, you always have you can say a certain time period. But if you have a G that is negligible, like in space, so then what the equations suggests you, what the equation tells you is that in that case your time period will be infinitely long. G zero हो गई तो आपका time period infinitely long हो गया, and so that means that the pendulum will not swing. In a time period infinitely long का मतलब ये है कि आपका जो है ना वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्विंग स्टार्ट ही नहीं हुआ, तभी तो इन्फिनिटली लॉन्ग. अगर स्टार्ट हो जाता तो कोई ना कोई टाइम होता जब उसको खत्म होता. ठीक है ना? तो होपफुली आपको आइडिया होगा कि किसी भी सिस्टम में अगर आपकी ऑसिलेशंस होती हैं, और ऑसिलेशंस होती हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इट्स वेरी इजी कि आपका जो सिस्टम है ना, वो एक तो ये कि फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई इफ द ऑसिलेशन इज टेकिंग प्लेस. तो आप देखते हैं कि इफ देयर इज एनी वेरिएशन इन एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, नॉट जस्ट डिस्प्लेसमेंट, बट अगर आपकी जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में या करंट में, या आप ले लें इसको ले लें, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, अगर इनकी वेरिएशन है about a certain value in either direction, and you are observing that variation repeatedly, all right, so in that case you say that there is an oscillation in that system. Oscillations are occurring in that, or oscillations are taking place in that system, all right. So that was happened. So I'm just trying to explain you that not only mechanical systems like spring mass system or the pendular system have the oscillations occurring in them, but you may have electrical systems as well, where you have the variation of the potential difference or the current about a certain value in other direction. So even in that case, we say that there are electrical vibrations, or you have the oscillations taking place, all right, and taking place in that system. So in that case as well, we study that. Okay, na? So it may not be just the displacement, but it may, because if you talk about variation of potential difference or the current about any certain value, so that is also due to the motion of the particles, all right, when the particles are being displaced from one point to the another, or due to some energy being provided, so there's always some variation in the potential difference, the current, and that's why you say that the oscillation is taking place. So now what is a simple harmonic motion? Now simple harmonic motion is a special type of periodic motion. Again, these two systems which we just discussed, the spring mass and the pendulum, these are also, they also have they actually include the periodic motion. Though आपके systems हमने discuss किए, they actually include periodic motion of the objects. In one system you have the periodic motion of the mass, ठीक है ना,
ठीक है ना, about the equilibrium position of the spring, and in the second case you had the and that motion of the pendulum was periodic. Why? Because it was like moving about the its equilibrium position in either direction. ठीक है ना, जो उसकी equilibrium position थी, उसकी equilibrium position थी उसकी either direction में, about this equilibrium position this pendulum was like moving back and forth or in either direction. So and that was occurring repeatedly. That's why we termed that motion of pendulum to be as periodic motion, and same is the case for the spring mass system. So now in all these motions, now not all periodic motions are simple harmonic motions. ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहां आपकी ऑसिलेशंस अकर हो रही हैं, लेकिन वो सारे सिस्टम्स या उन सारे सिस्टम्स में जो आपका मोशन है वो आपका पीरियोडिक तो है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो, क्योंकि कोई भी अगर आपका सिस्टम है और उसके अंदर पीरियोडिक मोशन हो रहा है और पीरियोडिक मोशन है किसी भी आइदर पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का, और उसकी वजह से आपके पास वेरिएशन में चेंज आ रहा है, इट मे बी वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और जो है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट, मतलब कोई भी सिस्टम है उसमें अगर आपका पीरियोडिक मोशन हो रहा है, ठीक है ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट मे द ऑब्जेक्ट मे बी एनी पार्टिकल, ठीक है ना, या फिर आपके पास कोई कोई ऑब्जेक्ट हो, something in bigger in size, like we had discussed, mass attached to one end of the spring and the pendulum attached to the string. So अगर कोई भी सिस्टम हो उसमें अगर आपका ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का पीरियोडिक मोशन है तो जरूरी नहीं है कि दैट विल बी टर्म्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, because for a periodic motion to be categorized as simple harmonic motion, the restoring force must be directly proportional to the object's displacement. अब ऐसा है कि हर किसी, जैसे आपका अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूं तो वहां आपके पास पीरियोडिक मोशन अकर हो रहा होता है, तो यू सी द वेरिएशन, sinusoidal variation or the cosine variation in the potential difference and the current. That's what you have seen, might have seen in real as well, and you have already discussed in ES series. ठीक है ना, तो अगर आपका मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, so we'll see कि आपकी in alternating current, we're going to learn about alternating current. So in that topic we're going to study the variation of alternating study that in an alternating current how the current varies with the time, and so similarly alternating voltage, and that's what you have been supplied in your households, ठीक है ना। तो अब आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसमें आपकी जो है ना ऑसिलेशन अकर हो रही है, ऐसी बात है, ये जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है या जो आपकी जो करंट है, तो दीज आर आल्सो इसमें इनकी जो मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आती है, दैट्स आल्सो रिजल्ट ऑफ द ऑसिलेशंस टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। पार्टिकल्स जो है वो ऑसिलेट करते हैं और उनकी ऑसिलेशंस से जो है ना एनर्जी ट्रांसफर होती है, एंड सो यू नो यू हैव देन the variation in the potential difference as well as the current, but उनका जो मोशन है पार्टिकल्स का, it's not categorized as simple harmonic motion, क्योंकि वहां आपकी जो there's a first of all you don't have the you know appreciable amount of the displacement, लेकिन उस केस में आपकी पार्टिकल्स की कोई इतनी appreciable amount of displacement नहीं होती compared to what you had in case of the systems which we discussed, that was the pendulum system and the spring mass system. तो वहाँ पे आप देख रहे थे कि आपकी ऑब्जेक्ट की एक appreciable amount of displacement है, तो अगर कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें आपका पीरियोडिक मोशन हो, ऑब्जेक्ट आपका उसमें ऑसिलेशंस अकर हो रही हो, तो वो कैटेगराइज होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन ओनली व्हेन आपकी उस ऑब्जेक्ट पे जो कि
that's undergoing oscillation, उस पे जो restoring force है that is proportional to the object's displacement. जैसे कि यहाँ पे था, हमारी discussion हुई थी कि this t sin theta is actually acting as a restoring force because it's going to restore this pendulum to its equilibrium position. And so the more you displace it, ठीक है, जितना ज़्यादा आप डिस्प्लेस करेंगे उतनी ज़्यादा ही कॉम्पोनेंट होगा. इसकी वजह यह है कि जितनी ज़्यादा आप इसको आगे डिस्प्लेस करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये थीटा होगा, जितना थीटा होगा उतनी ज़्यादा साइन थीटा की वैल्यू होगी, तो टी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी. ठीक है ना. सो the more you displace this pendulum, the higher the value of this component of tension, and so you can have a large, a higher magnitude of the restoring force. So in other words, you have this restoring force or the resultant, this over here, this t sine theta is actually your resultant force, and it's just not the resultant force. It is actually have a specific name, that's the restoring force, because it's actually restoring this pendulum to its equilibrium position. It's acting towards the equilibrium position. So whenever you have any system in which the oscillations are occurring, so then you categorize then the motion to be as periodic motion, and even in that case, your periodic motion will be categorized as simple harmonic motion when you have this restoring force acting on the object that is proportional to its displacement. ठीक है ना. तो ऐसे periodic motion को हम simple harmonic motion कहते हैं, and it's just not proportional, but it's always opposite to the direction of displacement. क्योंकि आप जो है डिस्प्लेस करेंगे अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये हमेशा एक्ट करेगी किस तरीके से, जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी दैट विल एक्ट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो एक तो प्रोपोर्शनल होते हैं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी. और इनफैक्ट ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो टी साइन थीटा है, दरअसल ये मेरी फोर्स के इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. दैट्स परफॉर्म द एक्शन रिएक्शन वैल्यू. तो मैं इस बॉल को ये खुद ब खुद तो डिस्प्लेस होगी ना, मेरी फोर्स से हुई. तो अगर मैं यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ तो ये दोनों बराबर हैं. अगर मैं अपनी फोर्स रिमूव कर दूंगा, ये बॉल रिलीज हो जाएगी, देन यू विल हैव देन टी साइन थीटा एक्टिंग एज अ अनबैलेंस्ड फोर्स, और उसकी वजह से फिर आपकी एक्सेलरेशन होगी. कहने का मकसद ये है कि आपकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज टी साइन थीटा ओवर है इन दिस केस, और उस केस में आपकी स्प्रिंग फोर्स थी, तो ये अगर प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और एक्ट करती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट सच दैट इट रीस्टोर्स द ऑब्जेक्ट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो इन दैट केस आपका उस ऑब्जेक्ट का जो पीरियोडिक मोशन है ना, दैट विल बी टर्म्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. और सिर्फ आपकी ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होती, अगर आपकी रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, तो इवेंचुअली आपकी जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी ना, वो भी प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट की, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना, वो सेम होती है एज अ डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स. सो इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम, सो आपकी जो एक्सेलरेशन होती है उस ऑब्जेक्ट की, वो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है, और वो भी आपकी ऑपोजिट होती है इन द डायरेक्शन. ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट करती है और हमेशा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्ट करती है. It is always directed towards the mean position or equilibrium position. Is it clear, Ms. Zoha, or not? Ariba? Clear हो गया बच्चा, नहीं हुआ? सर आप वो रिस्टोरिंग फोर्स का दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या चीज है? रिस्टोरिंग फोर्स बेटा कुछ भी नहीं है. मैंने अपनी फोर्स से ना इसको डिस्प्लेस करके इधर ले आया. एफ अरीबा आप अपनी फोर्स हटा दें तो क्या होगा, ये आपकी पेंडुलम ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगी, और इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा. अब लेकिन मुझे बताया कि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, दैट्स द अगेन एन रिएक्शन फोर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. ठीक है ना. व्हाट आई हैड एक्सर्टेड, जितनी फोर्स मैंने एक्सर्ट की थी उसी की इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स जो है ना, ये पेंडुलम एक्सर्ट करेगी मुझ पे. ठीक है ना, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है ना. और अगर मैं अपनी फोर्स रिमूव कर दूंगा तो ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगी. बट व्हाट यू कैन जस्ट सी इज व्हाटएवर द पोजीशन इज, ठीक है ना, चाहे आप इधर हो,
आपकी जो ये जो अनबैलेंस फोर्स है, जब आप अपनी फोर्स रिमूव कर देंगे जो कि आपकी पेंडुलम को क्या it's going to make it accelerate. So what can you see is you would observe that this force first of all is always going to act towards the equilibrium position, and in fact also that आपकी जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी. बात समझ आई या नहीं आई? सिमिलरली फॉर आपका जो स्प्रिंग मास होता है, अगर आप उसे एक्सटेंड करेंगे तो आपकी स्प्रिंग फोर्स फिर लेट्स सपोज यहाँ पे इन दिस केस इट्स गोइंग टू एक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. अगेन इट विल as soon as you're going to release your force, this resultant force acting on this resultant force, which is the spring force acting on the mass, is going to restore the spring to its original length. और अगर आप कंप्रेस करके आगे ले आएंगे, so the spring force exerted by the spring on the mass is going to again going to make it is again going to restore it to its original length. तो वो फिर आपकी राइट की तरफ एक्ट करेगी. बात समझ आई या नहीं आई? That's what restoring force is. ये दरअसल आपकी अनबैलेंस फोर्स ही होती है. अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपको आता है डिफाइन करने को? Simple harmonic motion is defined as the oscillatory motion of a particle. एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी है कि ऑसिलेशन अकर हो, ऑसिलेटरी मोशन हो ऑब्जेक्ट का. अगर ऑसिलेशन ही नहीं है तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर ऑसिलेटरी मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो. जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जहाँ आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में वेरिएशन आती है, तो वहाँ वो जो सिस्टम है उसमें जो ऑसिलेशंस हो रही हैं, क्योंकि वो भी आपका क्या है, व्हाट कैन यू सी फ्रॉम whenever you have a variation in the potential difference and the current, what you see is that you have a periodic change that is occurring. It's not just about that the change occurring for some instant, but whenever the change occurs, it continuously it follows throughout the time, that change. So that's actually that change or the variation occurring in the potential difference and the current periodically or repeatedly throughout the time. So also in that case, we also can say that you have the oscillations taking place in that system. But of course, those oscillatory motion, of course, that will be associated with the particles. ठीक है ना? वो जो variation आ रही है वो भी particles की displacement के that's again the cause of the displacement. That is actually the result of the displacement of the particles. Particles आपके displace होते हैं तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन आती है. बट अगेन वहाँ जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल्स आपके ऑसिलेट कर रहे हैं, सो दैट oscillatory motion of the particles in that system cannot be categorized as simple harmonic motion. ठीक है ना? So only in some cases जहाँ आपका object is undergoing oscillatory motion, you have that motion categorized as simple harmonic motion, and you have the condition defined for that. What are those? That whose acceleration is always directed towards a fixed point. ठीक है ना? That's basically your equilibrium position or the mean position. And secondly, must be directly proportional to the displacement from that fixed point, but in opposite direction to the displacement. यानी कि proportional हो, आपकी acceleration कह लें. You don't normally talk about in terms of restoring force. We talk about when you talk about simple harmonic motion, you actually talk in terms of the acceleration of the object. So you say that the acceleration must be directed towards a fixed point, towards the equilibrium position, or to the equilibrium position, or it must be directed towards the equilibrium position कह लें, or it must be directed towards the mean position. And secondly, that acceleration must be proportional to the displacement and also in the opposite direction. ठीक है ना? So ये आपने, you have to write this whole definition that carries 2 marks. So you have to state both of the conditions. First is that the acceleration must be directly, also acceleration of the object must be directly proportional to the displacement, and also must act in the opposite direction to the displacement. Secondly, the direction of acceleration
must always be towards the towards a fixed point, or normally it's a mean position or the equilibrium position. You may write any of these. ठीक है ना? अच्छा, negative sign indicated that the acceleration is always in a direction opposite to the displacement. Okay. Or fixed point is usually called the equilibrium position, the position at which no net force act on the oscillating particle. Again, when the equilibrium position is a point where you don't have any unbalanced force or the external force acting on it. So when the particle is displaced from the equilibrium position, it experiences a restoring force which tends to bring it back to the equilibrium position. और उसी की डायरेक्शन में आपकी जो है फिर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी होती है, जिसका जिक्र ऊपर डेफिनेशन में आया है. ठीक है ना? Restoring force always directed towards equilibrium position and so the acceleration. ठीक है? Is it clear to both of you or not? Is it clear to both of you or not? Zoha? जी सर. अच्छा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अच्छा ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. आपके पास अगर अच्छा नॉर्मली आपके पास जो है ना में अच्छा नॉर्मली आपके पास अच्छा सीन ये है कि आपके पास जो है ना वो था एम्पलीट्यूड था ना x equals to a sin omega t था plus phi. So right now in your if I talk about what is included in your curriculum, so your curriculum actually takes the value of phi equivalent to 0 phase angle. So you are just left with equation x equals to a sin omega t or cos omega t, depending on from which point your mass is released, either from the mean position or from the point of maximum displacement. ठीक है ना? तो अगर वो मीन पोजीशन से रिलीज किया गया है, अगर आपका मास मीन पोजीशन से रिलीज किया गया तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे ए की जगह ना एम्पलीट्यूड की जगह एक्स नॉट लिया जाता है. दैट अगेन रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. कहीं कहीं जगह ए भी लिया हुआ है, लेकिन आपके करिकुलम में ये एक्स नॉट यूज हुआ है. सो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो if it is been released from the equilibrium position, so x is defined as x naught sin omega t. अच्छा, फिर मैं यहाँ से अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, I'm going to get the equation for v which is omega x naught. ये पहले आपको जो मैंने पीछे दिखाया था वो ओमेगा a था. अगेन a को मैंने x naught से रिप्लेस कर दिया, जस्ट द सेम थिंग. और यहाँ phi एंगल 0 है, तो इट्स गोइंग टू बी ओमेगा x naught cos omega t. ठीक है ना? और अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट if it has been released, the object has been released from some point of maximum displacement, फिर उसकी इक्वेशन ये होती है, उसकी डिफाइनिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी. और फिर उसकी जो रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी होती है फिर वो ये होती है. ठीक है ना? इसमें अगेन ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है, यहाँ पे भी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी. और जो आपकी एक्सेलरेशन है इन बोथ द केसेस, दैट again you have the maximum acceleration always equivalent to minus omega square x naught. तो पीछे आपको जो मैंने शो करी थी उसमें a equals to minus omega square a है ना, a को मैंने रिप्लेस कर दिया x naught से. सो कहने का मकसद ये है, आपके पास जो एक्सेलरेशन है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, चाहे आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से रिलीज करें या इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलीज करें, मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट. ठीक है ना? ये हमेशा ध्यान में रखिएगा. अच्छा, यू हैव दी अच्छा, आपको किसी अगर पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी निकालनी हो, सो यू हैव दिस फॉर्मूला. ठीक है ना? एक्स नॉट तो आपका हो गया एम्पलीट्यूड. अगर आपको किसी और, जैसे कि ये आपको ना, ये आपके एम्पलीट्यूड है, ये एक्स नॉट है.
लेकिन आपको ना इधर इस जब जब एक पेंडुलम की पोजीशन ये है ना और उसकी डिस्प्लेसमेंट x है, तो इधर इसकी क्या वेलोसिटी ये फाइंड आउट करनी हो तो यू कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला. इसकी डेरिवेशन है बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. ठीक है ना, मैं नहीं जा रहा उसमें. सो बेसिकली ये जो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दिस इज used when you are being given a certain position or a certain value of the displacement and you've been asked to calculate the value at that displacement other than the amplitude. So at point of maximum displacement at amplitude आपकी जो velocity है that is equal to omega x naught. ठीक है ना, या माइनस ओमेगा x naught, doesn't matter. लेकिन अगर आपकी एम्पलीट्यूड या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के अलावा किसी और डिस्प्लेसमेंट किसी और पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे अगर आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, सो यू कैन ऑलवेज एंड यू हैव बीन गिवन दैट पॉइंट ऑफ वैल्यू फॉर द पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करो. इट्स वेरी सिंपल. अगेन वो मैं आपको यूज करना स्टार्ट. ठीक है ना. तो अच्छा, आपकी जो चाहे आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से रिलीज करें या इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलीज करें, आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो ओमेगा एक्स नॉट होती है, प्लस ओमेगा एक्स नॉट या माइनस ओमेगा एक्स नॉट व्हाटएवर. तो आपसे ज्यादातर मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो साइन इज नॉट एन इशू. और जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है एंड दैट्स ऑलवेज एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आके आपकी वेलोसिटी जीरो है. तो ये आपको भी वैसे भी पता है बिकॉज यू हैव स्टडीड इन when you were studying kinematics in AS physics. तो आपने लर्न किया था जब मैं बॉल को ऊपर थ्रो करता हूँ तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या होती है, जीरो है. इट कम्स टू रेस्ट एंड देन इट चेंजेस द डायरेक्शन. सेम केस हैपेंस ओवर हियर एज वेल. व्हेन यू गोइंग टू रिलीज इवन फ्रॉम, मतलब आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से रिलीज करें या इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलीज करें, हाईएस्ट पॉइंट पे आके it has to come to rest at some point of maximum displacement and then it's going to change the direction and move in the other way. move the other direction. ठीक है ना. अच्छा, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो अगर मैं एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल रखूं, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है तो फिर आपकी रिजल्टेंट फोर्स जो है ना वो क्या होती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता. तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स में ना कोई इफेक्ट नहीं आता. और रिजल्टेंट फोर्स पे इफेक्ट नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन भी आपकी क्या होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. समझ रहे हैं. मतलब आपका यूं कह लें, आपकी जो एक्सेलरेशन है ना उसमें चेंज आता है बट दैट्स अ यूनिफॉर्म चेंज. अच्छा, आपकी जो है अगर एयर रेजिस्टेंस भी होती है ना, व्हाट हैपेंस कि आपका जो फिर एक्सेलरेशन में चेंज आता है ना तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता. फिर वो कर्व होता है, नॉन यूनिफॉर्म. और फिर आपकी क्या होती है कि जो है ना टाइम के साथ साथ जो आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना वो भी कम होती जाती है. जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपने इधर से रिलीज किया, अब ये दूसरी तरफ चलो, ये जितना इधर था डिस्प्लेस पहली दफा में रिलीज हुआ तो ये दूसरी तरफ जाके उतना ही चला आ गया, एक्स जितना डिस्प्लेस हो गया ऑन द अदर साइड एज वेल. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसकी एक्स ऑन द अदर साइड एज वेल. लेकिन जब ये वापस आएगा ना तो नाउ इन दिस डायरेक्शन इट्स नॉट गोइंग टू गेट डिस्प्लेस्ड by the amount by the magnitude of x, but उससे थोड़ा सा कम डिस्प्लेस होगा, यहाँ तक जाएगा. and you have the air resistance playing a role in it. That's what we call as damping. यानी कि कोई अगर आपकी resistive motion, अगर आपको कोई फोर्स ऐसी एक्ट कर रही है एक्सटर्नल जो मोशन को रेजिस्ट कर रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इट्स अंडरगोइंग एन ऑसिलेटरी मोशन और उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्ट कर रही है दैट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, तो फिर इन दैट केस आपकी जो सिस्टम है ना दैट इज सब्जेक्टेड टू व्हाट वी कॉल एज डैम्पिंग इन फिजिक्स. ठीक है ना. एंड दैट what actually is happening then is आपकी जो वो एक्सटर्नल फोर्स है जो उसकी मोशन को रेजिस्ट कर रही है, that's actually slowing down
that process of slowing down that periodic motion. And so what is happening is that you may have then oscillations coming to a halt or may not even take place at all after some time. And what and how does it so? Because every time the external force is acting, so it is reducing that amplitude. ठीक है ना? And of course that damping is necessary in many of the cases, because you may not require oscillation taking place unwanted. You may not require unwanted oscillations taking place on their own in any system. तो जहां आपके पास सिस्टम के अंदर ड्यू टू some unwanted reasons अगर आपकी oscillations अगर होती हैं, तो you have to then somehow damp them, or you have to subside their effect, or you have to reduce them, or you to somehow remove them. तो उधर आप क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स जो कि आपकी ऑसिलेशंस को रेजिस्ट करे, यानी उस जो भी ऑब्जेक्ट आपका फिर उस किसी भी वजह से अगर ऑसिलेशन उस पर आकर होने लगी हैं, तो उसके फिर मोशन को रेजिस्ट करती है वो एक्सटर्नल फोर्स, और फिर उसमें दैट्स व्हाट वी कॉल एज डैम्पिंग, और उससे फिर ऑसिलेशंस कम होती हैं. टाइम कम्स दैट आफ्टर सम टाइम the oscillations completely are completely removed. ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ आ गई नहीं आई हरीबा? जोहा बेटा बात समझ आ गई आप दोनों को? जी सर आ गई. अच्छा, मैं आपको कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये बस आखिरी एक दो चीजें रह गई हैं, बेसिकली ग्राफ रह गए, और नहीं बल्कि चलो हाँ एक दो क्लासेस लगेंगी, फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. ठीक है मिस क्या कहते हैं रीबा? रीबा बेटा क्लियर है?